हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज इंजीनियरिंग। हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एआई इंजीनियर। इसमें सारे बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू बिकम एन एआई इंजीनियर सब बताए जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट और इस चैनल को फॉलो कर लो अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है तो। आज है क्लास 1 और आज हम जानेंगे व्हाट इज एआई इंजीनियरिंग और एआई इंजीनियर की लाइफ में और प्रोग्रेस और जॉब्स में क्या काम आता है और क्या होता है। सो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई इंजीनियरिंग। So AI engineering is a technical discipline that focuses on the design, development and deployment of AI systems. So AI engineer को design करना होता है, development करनी होती है और deployment करना होता है AI system. Basically, AI engineer has to build AI systems. So they involve applying engineering principles and methodologies to create scalable, efficient and reliable AI-based solution. So AI engineering और AI engineers AI based solutions बनाने होते हैं जो scalable होने चाहिए, efficient होने चाहिए, reliable होने चाहिए. So this is a basic definition of AI engineering. आइए अब जानते हैं some components, main components of AI engineering जो AI engineers को पता होना चाहिए. सबसे important component है data. I think AI systems need data to train, which is the most important part of your AI system. तो कहाँ से डेटा लाना है, उसको क्लेंस कैसे करना है, कहाँ स्टोर करना है विद सिक्योरिटी, ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ डेटा शुड बी मेंटेन्ड बाय एआई इंजीनियर्स। और एआई इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गैदर लार्ज डाइवर्स डेटा सेट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज डेटाबेसेस, एपीआईज, रियल टाइम स्ट्रीम्स as per their task. जो तुम्हें टास्क अचीव करना है और वट एवर यू आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट और वट एवर ए आई सिस्टम यू आर बिल्डिंग इट, उस बेसिस पे यू नीड द डेटा, train your models. Whatever you're using, either you're using pre-trained models or you're using from scratch or you're making model from scratch. So data plays an important part in your AI system. जब data की बात आती है, then you have to carefully engineering. You have to put engineering concepts to ensure the premium quality, widespread availability and usability of the data. Data भी तो quality सही होनी चाहिए उसकी. Should not be biased data or less data or not good data, right? So this is one of the main components in the AI engineering. Next comes the algorithm selection and optimization. Then AI engineer comes to a big task कि जो तुम्हें implement करना है, whatever AI systems you are implementing or whatever task you are trying to achieve, आपको algorithm selection करना पड़ेगा accordingly to success of your AI system. So engineers evaluate the problem कि वो classification है, regression है, which problem you're trying to solve, or it can be a deep learning problem. So you have to determine the most suitable machine learning algorithm to solve your problem and make a scalable, reliable AI system. So once then algorithm is chosen, you have to optimize that algorithm. So once an algorithm is chosen, optimizing it through hyperparameter tuning is essential to enhance efficiency and accuracy. आपके task, आपके AI system के लिए to be more efficient and more accurate, you have to fine tune it. You have to optimize it. So these are another main component of AI engineering. अब आते हैं डीप लर्निंग इंजीनियरिंग। जब टास्क होते हैं कोई जो इसमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स आर इन्वॉल्व्ड, देन डीप लर्निंग इज वन ऑफ द पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल टू इम्प्लीमेंट। सो जैसे कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर विजुअल टास्क्स, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क दैट इज वेरी गुड फॉर सीक्वेंस बेस्ड टास्क्स। So deep learning engineering is one of the big component in AI engineering. यहाँ पे engineers design neural network architectures tailored to specific applications. Another component is natural language processing. Basically, this focused on enabling machines to understand and generate human language. So basically, I can ask them in English and they can reply me back in English. So to understand the human language and generate the human language comes under natural language processing. So the process begins with text pre-processing to prepare data for machine learning models. So this is also one of the big component in AI engineering. ये सब हम इन डेप्थ में जाएंगे आगे वाली वीडियोस में। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है इंजीनियरिंग के लिए। सो जिसको ये इंजीनियर बनना है ये प्लेलिस्ट फॉलो कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। Reasoning and decision making systems. AI engineers have to make
systems which are capable of reasoning and decision making. वो रीजन कर सके और एआई सिस्टम कैन रीजन हाउ व्हेन व्हाई और डिसीजन बना सके. Whether starting from scratch or building on existing framework, engineers create solutions that operate on data or logical rules. So AI engineers, they will make AI based solutions that will operate on data, and there will be logical rules to implement or have your efficient solution for your task. Now security. I think if whenever I told you data is involved, security is involved. This should be your forefront priority. Security is critical consideration in AI engineering, particularly as AI systems become increasingly integrated into sensitive and mission critical applications. AI systems use sensitive data and they are mission critical applications. So their network or AI system should be secure. और जहाँ पे भी आपका data storage solutions है, that should be secure. So AI engineers implement robust security measures to protect models from adversarial attacks. Not just on the data level, even on the model level, you have to have security measures. तो कोई attacks ना हो जैसे कि evasion or poisoning, which can compromise your model performance, which can compromise your system integrity. So ये सब कुछ concepts है security on AI engineers जो AI engineers को ध्यान देना चाहिए. Next component ethic and compliance. जब आप AI system बनाते हो, if data is biased, racial or discrimination on anything, race, gender or anything, if there is any bias in any terms, I think you are doing it wrong. So AI systems, they are very, it increasingly influence societal aspects. So you have to be very careful with the components of ethics and compliance. Right? Your AI system should not discriminate in any way. So ethics and compliance also plays an important role in building an efficient AI system. तो ये कुछ आपके components है. You have to take care to build an efficient AI system which is scalable, reliable and efficient, which is accurate also. आपको अब AI engineering की components. What is AI engineering? AI engineering is basically design, development and deployment of AI systems. और जो AI engineers होते हैं, they do that. और ये कुछ components बताए हैं which are one of the biggest components in AI engineering. आपको बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा एंड यू आर क्लियर विद व्हाट इज एआई इंजीनियरिंग. आपको अब और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. जस्ट वी विल गेट इनटू मोर डेप्थ इनटू एडवांस कॉन्सेप्ट्स आफ्टर दिस. तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो अगर आपको एआई इंजीनियर बनना है और इस चैनल को फॉलो कर लो इफ यू eager to learn things. Thank you so much for watching till the end. I will meet you in another video. Till then, keep learning.